Hello and welcome everyone. Today in this video we are going to learn about A to Z entire HTML CSS interview questions and their answer that is generally asked by the interviewer to the interviewee for the selection process of front-end developer. Okay, so the first question is, what is HTML and CSS? HTML stand for Hypertext Markup Language, whereas CSS stand for Cascading Style Sheet. HTML and CSS are two of the core technology with the help of which we can create or build our web page or web application. Whereas with the help of HTML we can create the structure part of the web page, and with the help of CSS we give the layout to that structure. It means we give the styling part of that web page or web application with the help of CSS. Alright. Then the next question is, write down the syntax of the HTML. So first of all we have to write the doc type here, then we have to start our HTML tag and we have to close our HTML tag here. Then within this HTML tag we have to start our head tag and we have to close our head tag. And within this head tag we have to write the title, we have to start our title tag and we have to close our title tag also. Okay, and within this head tag and HTML tag we have to start our body tag and we have to close our body tag, and whatever we have to write for creating our web page or web application, that will be written inside this body tag. Okay, then the next question is, how to link HTML with CSS. So whenever we are creating a web page or web application, at that time we have to create two files, that is .html file and .css file. With the help of .html file we create the structure part of our web page or web application, and with the help of CSS file we give the styling part to that web page or web application. Okay, so we have to join that .html file with .css file, and it is done with the help of this link rel equal to stylesheet, type equal to text slash css, and href equal to styles.css, and this is the name of that css file that we want to link with that html file. Okay, and this will be written inside the head tag, and this head tag will be written inside the html tag, right? So here we will write that head tag and we will link that things within this head tag. Alright. Then the next question is it necessary to close all tag in HTML? The answer is no. If it is the link tag, input tag, HR tag which is used for horizontal line, BR tag which is used for line break, etc., then it's not necessary to close all those tag even if you have start those tag. Alright. But if it is the H1 tag, div tag or P tag, etc., then you have to close if you have start all those tag. Alright. Then the next question is, what is doc type or why we declare doc type? Doc type is a declaration which tells the version of the HTML to the browser. It is declared for proper rendering of our web page. डॉक टाइप एक डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है जो कि हमारा जो ब्राउजर है उसको ये बताता है कि हमारे यूजर कौन सी वर्जन ऑफ HTML को यूज कर रहा है अपना वेब पेज या वेब एप्लीकेशन को बनाने के लिए, दैट इज HTML3, HTML4 या HTML5 को यूज कर रहा है, राइट? वो चीज बताता है ब्राउजर को, ताकि ब्राउजर उसी हिसाब से अपना आउटपुट क्या करे, यूजर को प्रोवाइड कर सके. ठीक है, दैट्स व्हाई वी राइट द डॉक टाइप इन HTML. What is the difference between inline and the block level element? A block level element always starts on a new line and take up the full width available, stretches out to the left and stretches out to the right as it can. H1 tag, P tag, div tag, li tag are the example of the block level element. Whereas an inline element does not start on new line and only take as much as it's necessary. Inline element does not accept width, height, and as well as margin top and margin bottom. Then the next question is, what are the new tag in HTML5? There are so many numbers of new tags are there in HTML5, but out of those, some example are here. Semantic elements, header, section, footer, nav, etc. New graphics elements like SVG, canvas, etc. New multimedia elements like audio and video, and new form elements like details, keygen, etc. Then the next question is, what is semantic element? Semantic elements are those elements which have a proper meaning. It means an element that clearly describes its meaning to both the browser and the developer is known as semantic element.
For example, header, form, table, etc. These elements describe a proper meaning to both the browser and the developer. That's why we call it as the semantic element. On the other hand, deep span are called as non-semantic element because these are not define a proper meaning to both the user and the browser. Okay, that's why any elements which have a proper meaning is known as semantic element. Then the next question is, what is the difference between HTML element and HTML tag? If there is some content between the start tag and end tag of HTML, then it is known as HTML element. Otherwise, it is known as HTML tag. Here you can see that p tag is start and p tag is closed, but inside that p tag there is nothing. So we can call it as the tag, but in the next line you can see that the p tag is start and p tag is closed, but inside that we have written milestone creator. That's why this is known as the element. Okay. Then the next question is, where and how are shorthand property are used? Give example. Using shorthand property, we can improve our page load time and reduce file size. So whenever we are writing the CSS code at that time, instead of writing in different line, that is padding top equal to 10 px, padding right equal to 20 px, padding bottom equal to 30 px, and padding left equal to 40 px, instead of writing in this way, we will write all these things in a single line, that is padding 10 px, 20 px, 30 px, and 40 px, so that we can reduce our file size and it will be helpful for us to load the page time and reduce the file size also, right? Then the next question is, what is responsive web design? Responsive web design make our web page looks good on all devices like laptop, desktop, and mobile phone. It can be achieved by using media query or any framework like Bootstrap, w3.css, etc. Then the next question is, what is the difference between the class and the ID? The main difference is that the same class selector can be applied to multiple HTML elements, whereas ID selector can be used only to unique element of HTML. Okay? Then the next question is, what is viewport? The viewport is the visible area of a web page. The viewport varies with the devices and will be smaller on the mobile phone, whereas it will be larger on the computer screen. Then the next question is, difference between the B tag and strong, or I tag and EM tag. B tag and strong tag both are used to bold the text, but strong text will provide extra emphasis to the text, whereas B tag will not provide any extra emphasis to that text. Similarly, I and EM both are used to italic the text, but EM will provide extra emphasis to the text, whereas I tag will not give any extra emphasis to that text. Then the next question is, what is CSS box model? All HTML element can be considered as the boxes. In CSS, the term box model is used when talking about the design and the layout part. The CSS box model is essentially a box that wraps around every HTML element. It contains a margin, border, padding, and the actual content. So here you can see this is content part, this is padding part, this is border part, and this is margin part. Okay. So first of all, we will see content. What is content? The content of the box where the text and the image appear. It means this is the content part, here the text or the image will be appear. Okay. Then padding. It clear an area around the content. The padding is transparent. Alright. Then border. A border that goes around the padding and the content. Here you can see all these things in detail, right? Then the last thing is margin. Margin clears an area outside the border. The margin is transparent. Alright. Then the next question is, what are the different types of list in HTML? So there are mainly three types of lists are there in HTML. First one is on order list, then order list, and the third one is definition list. Okay, so the first one is on order list. In case of on order list, we use the UL tag.
So first of all, we have to write the UL, we have to start our UL tag and we have to close our UL tag inside the body tag. Okay, and inside this UL tag we have to start the li tag and we have to close the li tag, and similarly we will do like this. All right, so whatever we will write inside this li tag, that will be shown or that will be reflected like this. So if you will give type equal to square, then the dot will be converted into square. If we will give the type equal to rectangle, then it will this dot bottom will be converted into rectangle. Okay, in this way we will create a order list in HTML. Okay, similarly when we will create a order list, at that time we will use the OL tag. Okay, so first of all we have to start our OL tag, then we have to close our OL tag, and inside this OL tag we have to start the li tag and we have to close the li tag, and similarly we will do like this, and whatever we will write inside this, that will be reflected like this. Okay, here the numbering will come. All right, here the dot, rectangle or square will become, but here the numbering part will become. Okay, that's why we call is as the order list. All right, then the third one is definition list. So in case of definition list, we use the DL tag. Okay, first of all we have to open the DL tag, we have to close the DL tag, and inside this DL tag we have to take the DT tag and DD tag. All right, DT means a term and DD means term definition. All right, so here you can see the example. First of all we have to start the DL tag, we have to close the DL tag, then whatever we will write inside this DT tag, that will be come as the heading. Okay, and whatever we will write inside this DD tag, that will come as the subheading. All right, so in this way we will use the definition list in HTML. All right, then the next thing is, what is CSS position? The CSS position specify the type of positioning method used for an element in CSS. There are mainly 5 different types of CSS positioning are there. Those are static, relative, fixed, absolute and sticky. But mainly here we consider the first 4. These are static, relative, fixed and absolute. Okay. So what does the static positioning says? Let me consider these are 3 images. Okay, 3 elements or 3 images are there. So if I will apply the positioning of this image as static, then there will be no change will be occur here, because by default it will be in static mode, in static positioning. Okay, but if I will apply it as the relative, if I will apply this image position as the relative, then what will happen, this the position of this image will only change, but the remaining image will remain constant in the same place. Okay, but if I will apply the position as absolute, then what will happen, it will start appearing from the screen corner. Okay, or it may be from the margin corner. All right, but if I will make the position of that images as the fixed, then what will happen, the image will remain constant here. Although I will scroll the page, then also the position of that image will not change, it will remain at the same place and constantly. Okay, so these are the main 4 CSS positioning. What is inline, internal and external CSS? जब भी हम कोई HTML फाइल बनाते हैं, उसके अंदर जो बॉडी टैग होता है, उस बॉडी टैग के अंदर जो भी एलिमेंट हम लिखे होते हैं, उसको अगर हमको स्टाइलिंग प्रोवाइड करनी है, तो वो हम 3 तरीके से कर सकते हैं. एक हो गया इनलाइन, दूसरा इंटरनल एंड तीसरा एक्सटर्नल सीएसएस के थ्रू से. ठीक है, तो सबसे पहले हो गया इनलाइन सीएसएस. तो इनलाइन सीएसएस में क्या होता है, जो भी हम बॉडी टैग के अंदर जो एलिमेंट लिखे होते हैं, उसको अगर हमको स्टाइलिंग प्रोवाइड करनी है, तो उसके लिए जो सीएसएस होता है वो उसी लाइन के अंदर स्टाइल टैग के अंदर लिख लेते हैं, और हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इसको स्टाइल प्रोवाइड कर देते हैं. जो एलिमेंट होता है उसको हम स्टाइलिंग प्रोवाइड करते हैं. इसी चीज को बोला जाता है इनलाइन सीएसएस. ठीक है, देन द नेक्स्ट थिंग इज इंटरनल सीएसएस. इंटरनल सीएसएस में क्या होता है, जो भी हम एलिमेंट बॉडी टैग के अंदर लिखे होते हैं, उसको अगर हमको स्टाइलिंग प्रोवाइड करनी है, तो उसके लिए जो सीएसएस लिखा जाता है वो हेड टैग के अंदर लिखा जाता है,
और हेड टैग के अंदर हम एक दूसरा एक टैग लेते हैं दैट इज स्टाइल टैग, और स्टाइल टैग के अंदर जो भी CSS लिखना होता है हमको उसको स्टाइलिंग प्रोवाइड करने के लिए वो CSS हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। और उसी हिसाब से हम हमारे जो एलिमेंट है उसको स्टाइलिंग प्रोवाइड करते हैं, इसी को बोला जाता है इंटरनल CSS। ऑलराइट, देन द लास्ट वन इज एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS में क्या होता है, जो हमारे बॉडी टैग होता है, बॉडी टैग के अंदर जो भी एलिमेंट लिखा होता है उस एलिमेंट को अगर हमको स्टाइलिंग प्रोवाइड करनी है तो हम क्या करेंगे, दूसरा एक CSS डॉट CSS नाम की एक फाइल बनाएंगे और उसमें हम क्या करेंगे, उसके लिए CSS का कोड लिखेंगे और हम क्या करेंगे, ये CSS को यानी कि स्टाइल डॉट CSS नाम की जो फाइल है उसको हमारे डॉट HTML फाइल के साथ क्या कर देंगे, लिंक कर देंगे। और वो लिंक कैसे करते हैं, लिंक rel इक्वल टू स्टाइल शीट एंड href styles डॉट css, ये है ये हमारा CSS के फाइल के नेम, ठीक है। तो इस तरह से हम एक्सटर्नल CSS प्रोवाइड करके हमारा जो एलिमेंट होता है बॉडी टैग के अंदर उसको हम स्टाइल प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो दीज आर द थ्री types of CSS, that is internal CSS, inline CSS and external CSS. Then the next question is, what is selectors in CSS and what are the different types of selector that are used in CSS? A CSS selector is the part of CSS rule set that actually select the content you want to style. Okay, there are so many different types of selectors are there. The first one is universal selector, element type selector, ID selector, class selector, etc. But generally we use the ID selector and class selector in our CSS. Then the next question is, what is the difference between the class and the ID? In the CSS, a class selector is named processed by the full stop and an ID selector is named processed by the hash character. Okay. The main difference between the ID and the class is that an ID can be used to identify one element, whereas a class can be used to identify more than one element. Okay. Then the next question is, what is span tag in HTML? Span tag के थ्रू से हम क्या करते हैं, हमारा जो HTML फाइल होता है उसके अंदर जो बॉडी टैग होता है, बॉडी टैग के अंदर जो भी एलिमेंट लिखे होते हैं उनमें अगर हम उनमें से अगर कुछ वर्ड को अगर हमको चेंज करना होगा, स्टाइलिंग प्रोवाइड करना होगा तो वो हम स्पैन टैग के थ्रू से करते हैं। तो यहाँ पे देखो लिखा गया है बॉडी टैग के अंदर, वेलकम टू माइलस्टोन क्रिएटर यूट्यूब चैनल, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि ये सेंटेंस का जो माइलस्टोन क्रिएटर जो नेम है इसका कलर को मुझे रेड करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो वर्ड है इसका पहले एक स्पैन टैग लगाऊंगा और उसके बाद मैं स्पैन टैग को क्लोज करूंगा, ठीक है। और जो स्पैन टैग है उसके अंदर मैं CSS कोड लिखूंगा, ओके, सो दैट ओनली ये माइलस्टोन क्रिएटर जो नाम है उसका कलर चेंज हो जाएगा, लेकिन बाकी जो वर्ड है उनका कलर एज यूजुअल रहेगा, ठीक है। तो इसका आउटपुट यहाँ पे क्या है, देखो वेलकम टू माइलस्टोन क्रिएटर यूट्यूब चैनल, लेकिन इसका जो कलर है वो चेंज होके ब्लैक से रेड हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से हम स्पैन टैग को HTML में यूज करते हैं। ऑलराइट, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू क्रिएट ए टेबल इन HTML। ये आप लोगों को पता होगा HTML में हम किस तरह से टेबल क्रिएट करते हैं, उसके लिए कौन सा टैग लगाया जाता है, दैट इज टेबल, TR, TD, TH, कैप्शन, ऑल दिस थिंग्स। ओके, सो आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू क्रिएट द HTML फॉर्म। ये भी आप लोगों को पता होगा किस तरह से फॉर्म क्रिएट करते हैं HTML के थ्रू से, आप जरूर से देख के जाइएगा और प्रैक्टिस करके भी जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे इंटरव्यूअर आपको डायरेक्टली पूछ सकता है कि मुझे एक टेबल क्रिएट करके दिखाओ या फिर फॉर्म क्रिएट करके दिखाओ, बोल सकता है। सो आपको आगे से प्रिपेयर होकर रहना चाहिए, ठीक है। Then the next question is, what is opacity in CSS? Opacity means transparency. जब भी हमको कोई इमेज को अगर ट्रांसपेरेंट बनाना है तो हम opacity कीवर्ड का यूज करते हैं CSS में, ठीक है। तो ओपासिटी का जो वैल्यू होता है वो 0.0 से 1 के अंदर रहना चाहिए। यहाँ पे देखो ओपासिटी का वैल्यू 1 है, सो इस तरह से इमेज दिखेगा। ओपासिटी 0.5 हो जाएगा तो ऐसे दिखने लगेगा, और ओपासिटी 0.2 कर देंगे तो इमेज इस तरह से दिखाई देने लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम ओपासिटी का यूज करते हैं ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए CSS में। ऑलराइट, then the next question is, what is hover selector in CSS? ओके, होबर को हम CSS में किस तरह से यूज करते हैं। तो होबर का मतलब क्या होता है, जब हमारा जो माउस का पॉइंटर होता है उस माउस का पॉइंटर का अगर एलिमेंट के ऊपर हम इसे रख देंगे, ठीक है, तो इसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, उसी चीज को बोला जाता है होवर। ऑलराइट, दैट्स व्हाई वी हैव रिटन select and style a link when you mouse over it।
यानी कि हमारा जो माउस का पॉइंटर है वो एलिमेंट के ऊपर ऐसे रख देंगे तो उसका कलर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए CSS कोड यहाँ पे लिखा गया है, देखो होवर बैकग्राउंड कलर दिया गया है येलो। तो इसको अगर ट्राई करेंगे तो ये होगा, देखो। तो ये है हमारा HTML कोड, ऑलराइट। और HTML कोड के अंदर हम, ये है हमारा बॉडी टैग के अंदर लिखा गया ये दोनों एलिमेंट, ओके। और इन दोनों एलिमेंट को स्टाइलिंग प्रोवाइड करने के लिए जो CSS है वो यहाँ पे लिखा गया है, ये है हमारा इनलाइन CSS, राइट। तो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे जब हमारे माउस का जो पॉइंटर है, ये माउस का पॉइंटर को जब ये लिंक के ऊपर ले रहे हैं उसका कलर चेंज हो जा रहा है, राइट। तो ये जो कलर चेंज हो रहा है जब हमारे माउस का पॉइंटर उसके ऊपर जा रहा है, उसी चीज को बोला जाता है होवर, ऑलराइट। तो ये होता है हमारा CSS में, हम अगर होवर लिखेंगे और होवर में बैकग्राउंड कलर जो है इसको येलो प्रोवाइड करेंगे, तो इस तरह से हमारा जो माउस का पॉइंटर को जब एलिमेंट के ऊपर लेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। और वो यहाँ पे येलो दिया गया है, इसलिए यहाँ इसका कलर क्या चेंज हो रहा है, येलो में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज हम होवर के थ्रू से कर सकते हैं, ऑलराइट। Then the next question is what is Z index in CSS? Okay, Z index का काम क्या होता है? देखो फॉर एग्जांपल हमारे पास दो एलिमेंट है, एक है इमेज और एक है एक टेक्स्ट। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ जो इमेज है वो इमेज टेक्स्ट के जस्ट पीछे रहे और हमारा जो टेक्स्ट है वो इमेज से पहले रहे। ठीक है, या फिर हमारा जो टेक्स्ट है वो इमेज के पीछे रहे, या और हमारा जो इमेज है वो टेक्स्ट से पहले रहे। अगर यही चीज हमको करना है तो वो हम जेड इंडेक्स के थ्रू से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक इमेज है और इमेज में हम क्या किए हैं, जेड इंडेक्स को -1 अप्लाई किए हैं। ठीक है, तो इसको रन करके देखेंगे तो क्या आउटपुट देगा, देखो ये है हमारा HTML फाइल जहाँ पे HTML कोड लिखे हैं और इसमें हम इंटरनल CSS अप्लाई किए हैं इमेज के ऊपर, और जहाँ पे जेड इंडेक्स को हम दिए हैं 1। जब यहाँ पे जेड इंडेक्स 1 है, ठीक है, तो हमारा जो इमेज है, इमेज क्या है, हमारा टेक्स्ट के पहले है। और जब हम जेड इंडेक्स को -1 कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, ये जो इमेज है ये पीछे चला जाएगा और हमारा जो लेटर है वो आगे आ जाएगा। रन करके देखते हैं, देखो हमारा जो इमेज है वो पीछे चला गया और हमारा जो टेक्स्ट था वो आगे आ गया। फिर से अगर इसको हम +1 करेंगे तो हमारा जो इमेज है वो आगे आ जाएगा। ठीक है, और टेक्स्ट पीछे चला गया। तो ये चीज को करने के लिए हम क्या करते हैं, जेड इंडेक्स का हेल्प लेते हैं। ठीक है, तो ये है जेड इंडेक्स का काम CSS में।